आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाने का। तो SAVESOIL.org के पर एक लिंक है जहां पर राइट अ लेटर नामक इस लिंक पर आप एक्सप्लोर करें तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री एवं कृषि मंत्री तक अपनी चिट्ठी को आप पहुंचा सकते हैं, जिसमें आप यह कहना चाह रहे हैं कि आप सरकार को अपना समर्थन देते हैं कि जब भी वो मिट्टी को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे, कितना भी कड़ा क्यों ना हो, आपका उसमें समर्थन है। क्या ऐसा करने से वाकई पॉलिसी में चेंज आ पाएगा? बिल्कुल आ पाएगा। सदगुरु के बारे में कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगा। आज से 5 वर्ष पूर्व रैली फॉर रिवर्स नामक एक कैंपेन सदगुरु के मार्गदर्शन में शुरू किया गया, RFR। रैली फॉर रिवर्स का मकसद क्या था कि भारत की नदियों को बचाना, क्योंकि नदियां भी खत्म हो रही हैं। बचपन में मैंने तो एटलीस्ट ये पढ़ा था कि जो भी नदी निकलती है, ओरिजिन कुछ भी हो, वो पहुंचती कहां पर है? समुद्र में। लेकिन शायद मेरे से अगली पीढ़ी इस बात को नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि यह सत्य अब रहा ही नहीं। मोर देन 60% ऑफ रिवर्स, इंडियन रिवर्स, दे डू नॉट टच ओशन फॉर मोर देन 4 months इन अ ईयर। क्या आपको ये बात मालूम थी? देश की कई बड़ी नदियां एक वर्ष में 4 महीने समुद्र को टच भी नहीं कर पाती। ऐसे में नदियों को बचाना बहुत जरूरी था। सदगुरु ने रैली फॉर रिवर्स कैंपेन का आगाज किया, जिसके चलते भारत में 16 करोड़ 40 लाख लोगों ने लगभग RFR को अपना समर्थन दिया। और यह समर्थन जब भारत के प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, इस डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर यह बहुत बड़ा आंकड़ा था। सदगुरु ने एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट दिया 700 पन्नों का, राइट, जिसमें हमने सरकार को बताया कि किस प्रकार नदियों को वापस बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कॉल टू एक्शन। सदगुरु ने खुद कावेरी कॉलिंग नामक एक कैंपेन को शुरू किया और यह पृथ्वी का आज तक का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल कैंपेन साबित हुआ। कावेरी कॉलिंग इस कैंपेन के अंतर्गत कावेरी बेसिन, जिसका एरिया करीब 85,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, पिछले करीब 3 वर्षों में 1,25,000 किसानों द्वारा, आई रिपीट, करीब 1,25,000 किसानों द्वारा करीब 6 करोड़ 25 लाख से अधिक सैपलिंग्स पेड़ों की लगाई जा चुकी है। ये आज तक का पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा। Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. 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 These other aspects, but we are not addressing soil. Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food
in early 20th century to what you're getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it. Now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by plowing, open to sunlight, is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible, some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. Conscious Planet is launching Save Soil movement to bring about a policy change to regenerate soil as a part of this. पीढ़ी ने, माफी मांगता हूं आपसे, मेरी पीढ़ी ने और मुझसे पिछली करीब 2-3 पीढ़ियों ने कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे बाद की 2-3 पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा संकट आज सर पर मंडरा रहा है। और ये पीढ़ी अगली पीढ़ी से हाथ जोड़कर माफी तो मांगती ही है, पर आपसे मदद की याचना करती है कि चलो मिलकर इस संकट से मिट्टी को बाहर निकालें। अगर आज एग्रेसिवली, आई रिपीट एग्रेसिवली, आई री-रिपीट एग्रेसिवली, अगर हमने मिट्टी को बचाने का कार्यभार अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबली नहीं संभाला, तो जो काम 20 वर्षों में किया जा सकता है, अगर यह देरी हो गई 10 वर्षों की भी, तो इसी काम को करने में शायद 100 वर्ष लग जाएं। और अगर यह देरी 20 वर्ष की हो गई, तो उसके बाद वापस मिट्टी को मिट्टी का दर्जा दे पाना संभव होगा भी कि नहीं, इस पर साइंटिस्ट बहुत कुछ कह रहे हैं। और आपको मालूम है, एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामिया, रोम, अगर इनके इतिहास को आप पढ़ें, ये खत्म हो गई। और इनके खत्म होने का सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं क्या था? सॉइल डिग्रेडेशन। Soil body. The magic of soil is eternal. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it. Can I have a principal guys, please? Dr. Benson, आप भी please मंच पर आ जाएं. The architects of the nation. And thank you so much for making this event possible.
Can you have the anthem on yet again? This very body is soil. In charge Isha Foundation, Chandigarh region, colleagues and dear students, very crisis by bringing together people from around the world to stand up for soil health and supporting leaders of nations to institute national policies and actions towards increasing the organic content in cultivable. मैम अभी साथ I also request of Isha Foundation, Chandigarh region, 7 billion people. It preserves clean water and helps regulate the climate. Soil degradation reduces agricultural yields and threatens farmers' livelihoods. Soil provides nutrients for trees, plants, crops, animals, and 100 million microorganisms that are essential for life to continue on this planet. If the soil becomes unusable or unstable, then the whole process stops. Nothing else can grow. But with improved soil management practices, soil can be protected and even regenerated. I appreciate the efforts of Dr. कि अब जीवन और जीविका इन दोनों में मैं कुछ खास फर्क नहीं समझता और आज इस कॉलेज के प्रांगण में मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रिंसिपल मैडम, आपके फैकल्टी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सब कॉन्शियस लोग हैं जो समझते हैं that college is not about preparing students only for livelihood, but it is majorly about preparing people, students for life. College should not just be about preparing students for higher education, for bigger universities. College should be all about preparing students for universe, for life as a whole. So I'm glad that we have such institutions who are sensitive enough. Who am I? I am that being human means I come from humus. And what does humus mean? Humus means that component of the soil which is organic and made out of dead plants and animals. That is why we say soil is the only ecosystem which does this magic of converting death into life. So I'm just a sensible human being who recognizes that I am soil too. And this is even better that I'm addressing the gathering of female students. Females are far more sensitive than males, and this is a superiority. This is an advantage you have. There are enough scientific studies which reveal that women are far more sensitive to social issues, emotional issues, towards environment, and much more. So this is a competence you have. And we often refer to Earth as Mother Earth. So even Earth is from your gender. She is feminine. Why do we call Earth as Mother and not Father? Because she's all about giving life, nurturing life. But see what we have done. As a generation of people, we offer apologies to our next generation that what we have done to our soil. Of late, this term has become very popular, sustainability. Anybody from my worthy audience, what does this word sustainability mean? आप में से कोई क्या बताना चाहेगा? इस शब्द का मायना क्या है? सर ने इतनी अच्छी तरह से एक एक चीज, एक एक पॉइंट इतनी डिटेल में बताई हमारे को that I think there's no doubt that I can see each one of you going back home and actually opening up SAVESOIL.org and actually registering yourself as Earth's buddy and actually writing those letters, getting on to Twitter. See, now I was never on Twitter, but just about 3 months back when I got to know that क्या power है Twitter की, that's when I downloaded it and I decided कि इसको tweet करना है for the next 3 months till he is riding, at least for those 100 days.
So I request all of you to download your Twitter and today itself. And then hashtag Save Soil. That is all. Follow the Conscious Planet Save Soil. And just quote tweet on it. Whatever you feel like. कोई भी आपको notification आती है, just quote tweet on it with a hashtag Save Soil. Trust me, it's going to make a big difference to all of our lives. So right now, I think I won't waste any more time. We are going to have this beautiful anthem, which is the Conscious Planet Anthem. आपको पता है ना significance of an anthem? It brings